وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا۔ اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی رہتی ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک برکت نام سے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا فنکشن۔ Before starting, I would like to request Mr. Shujat Ali, former Secretary Industries, sir, please come on stage. It will be our honor to have you here and your presence. آپ کے آنے کا فائدہ اٹھانا کوئی نہیں، آپ کے بیٹھنے کے بھی ہمارے لیے we have been organizing these seminars on the platform of Lahore Chamber of Commerce and Industry, on the platform of Jahangir Badr Institute of Vision and Leadership. This is our third seminar, and the format of this function is that we have two of the keynote speakers. They come and they share their view, and we have been holding these seminars for quite a long time, since 2011, but now we have been more organized and doing it on a monthly basis. This platform was made back in 2011 by my beloved father, Jahangir Badr, Dr. Jahangir Badr, who was the only working parliamentarian in South Asia who got his PhD with distinction back in 2013. So the name of the institute then was Institute of Vision and Leadership. After his death, we named this institute Dr. Jahangir Badr Institute of Vision and Leadership. So we have been organizing three kind of seminars. One is economic social, that we hold in collaboration with Lahore Chamber of Commerce and Industry. The one we hold on political topics, that is done on another platform every month. The first Friday of every month we hold the political seminar. The second Friday of every month we hold the legal topics of CPC and CRPC, PPC, and there are a number of legal issues that people really want to seek knowledge on. And the last Friday of every month we collaborate with Lahore Chamber of Commerce and Industry, and we hold this seminar. So this is how we have been operating. Today we have two of the very honorable guests with us. Mr. Hassan Khawar, who is an old friend. He's an international development consultant and journalist, writing in the newspaper and analyst on the different television channels. And then we have a very keynote speaker, Mr. Athar Mansoor, who is a senior consultant and researcher at the University of Hong Kong. So we are very thankful and grateful that you have honored us to be part of this platform, and you're going to share the views on today's topic. The topic is rethinking public policy. So I've been writing when this COVID started back last year in March. I started reading books in the library of my father, and I read this book. He wrote
different articles by the name of Grand Agenda of Pakistan since May 1998 till 2000. So there were a number of different articles which he have been writing. So while cleaning the library, I found out that there is a book in the name of Grand Agenda of Pakistan. So I took that name and I started writing articles in Daily Pakistan Urdu and Daily Times English on the same topic of Grand Agenda. So on different topics. So today's topic, which is a rethinking public policy, I have given my 2 cents on it. I want to share. There is a strong progressive relationship between public policy and governance. Our next topic is going to be governance, because I feel public policy, if public policy is fixed, then we don't have to worry about anything, because public policy is the key thing in the country that takes you ahead in life, especially for the government and country. Public policy is the strategy of the bigger plan, and governance is the action of that plan in the shape of implementation. Public policy is the method by which governments transform their political vision into strategic programs and seek ways of implementation for the actions to deliver the outcome of anticipated modifications in the constantly changing environment. These are created in order to address the issues that arise before the decision makers and lawmakers convert them into laws and regulation, meeting the societal needs, wants, and ensure promises to focus to transform the society, communities, nation, and their resources, and keep general order in society. It is an ongoing process having no start and end. The agenda is to set with the issues to address them for policy decision makers, having segments of every sphere of life where a plan is need to be set for long-term vision and its decisions that are intended to solve problems and improve the quality of life for its citizens. In the formation of policy, the agenda is to be discussed in detail and the solutions are proposed to be achieved in the given time. The leaders of the political parties, different groups, civil servants, business leaders, representatives of the civil society, and all necessary stakeholders to be made the part of the process for forming the policy. This policy has to be made legitimate by the action of the government and must be moved through the legislative process. A policy is adopted when Parliament passes legislation, the regulations become final, or the Supreme Court decides the verdict in a case. The Supreme Court has no mechanism to enforce its decisions. Other branches of government facilitates and must implement its fortitude. Successful implementation depends on the complication of the policy, coordination between those putting the policy into effect, and compliance. The policy can only be made successful by acting on the action plan through implementation. Poor implementation can be a big failure even for a very well prepared and written policy. The developed countries and countries who have a rapid growth rate have developed their public policy for a long term, mid-term, and short term, and they have set a given targets to achieve the set goals in order to have a vertical and horizontal growth. In the same lines and in the same line and spirit, Pakistan needs to have a 200, 150 years, 25 years, every 10 year, 5 year, and every year plan. Further, every year plan needs to be subdivided into half year, quarter month plan, every month, every week plan. If you ask the government officials, they will say we have the plan the same way you say, and yes, I agree it is available in the official capacity and the textbooks in the same way I mentioned, but there is no agenda in implementation of the policies in any sector.
We need to take war-footing steps in the country with the added value of technology and digitalization in all sectors in order to keep Pakistan intact and compete with the regional and global powers. A detailed action plan can be prepared for all the sectors, but it needs efficacy from top to bottom in strategizing and implementation. I am sharing the highlights which can be given a detail through thorough and brainstorming from the experts of every particular sector, keeping in mind the viewpoint of the stakeholders as well. We have already discussed on the CPAC. I am not going to talk CPAC. My views on that our army has already fenced most of the western border and the work is ongoing. It should be highly commendable as we are sleeping with peace in mind, as most of us don't know the ground reality of North and South Waziristan. As a student of the National Defense University, I had the honor of visiting the North and South Waziristan thoroughly. And one of the things which is commendable that in the installation of thousands of cameras in Lahore, most of them are unfortunately now not working due to service issues and making the Safe City Authority in order to keep an eye on the criminal law offenders. We should follow the same path and plan to extend the Safe City Authority for Pakistan top, if not 30 cities, at least 10 or 15 cities in next 5 to 10 years. The working relation and exchange of data information between the State Bank and all other banks, NADRA, Federal Board of Revenue, SCCP, Excise and Taxation, different law enforcing agencies, including FIA and police, all the utility service providers, and few other departments, which can be added as and when required. This sharing of data will help them identify people who are non-taxpayers and living beyond means. This will include people who are traveling, especially with families and spending too much money, traders and retailers, people buying expensive vehicles, especially having more than one, people buying lands or more than one residence or commercial properties, people who are making transactions with unknown sources of income, people who are paying huge amounts to private hospitals and paying huge fees for their children for private schooling and university, people running more than one company and people paying huge utility bills but not interested in paying taxes. This is just a cycle which can make people realize that they have to come within the tax net in order to keep the things working for Pakistan. This will help all the government agencies to keep a check and balance on the cartels controlling their respective industry out of the reach of accountability. These are few of the points which I have highlighted. These all require a strong session rethinking on public policy. A detailed new public policy on building soft and hard infrastructure, including health, education, environment, information technology, sports, youth, culture, water management, handling and exploring of natural resources, especially continuity of TAPI, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, and India, and Iran-Pakistan gas pipeline, which will help Pakistan in reducing the cost of utility services in gas and electricity, which will have an inherent effect of low-cost production in all the sectors and products, which will be economical. Just to name a few which is available here. We should also prepare a policy for moving on to electric vehicles in next 5 to 10 years. A policy with strong regulation is needed for recycling plants, which must be a part of every production and manufacturing units across the country. A detailed policy is needed backed up by the strong regulation for water wastage and smart architecture for commercial and housing, where water should be saved and recycled for usage. Accountability should start from low grade officer to the topmost. A NAP questionnaire with more than 45 questions would be given to every politician, every person doing business with government. It will minimize the chances of bribery
and public servants who are withdrawing salary from public exchequer to bring everything on record, all the family, in order to know about their assets and when they started their career. These all policies need to be discussed individually in separate articles and policies. This is not enough space to write about each and every sector here. It's just a highlight of the things needed to be done. At the federal level, public policies are enacted to regulate industry and business, to protect citizens at home and abroad, to aid state, city governments, and people such as the poor through funding programs and to encourage social goals. A policy established and carried out by the government goes through several stages from inception to conclusion. These are agendas: building, formulation, adoption, implementation, evaluation, and termination. In reality, a country is a cherished reflection of its public policy, which is the main manager of its governance style and planning. Evidently, analyzing the characteristic of governance through the elements of public policy arrangements, it's fundamental to defining everyday and workable strategies for upcoming good governance. Governance which is repeatedly left in the hands of the political and administrative leadership through the tools of public policy, discussed largely to the use of power through a national, political, economic, social, technological, environmental, and legal, institutional, for the advantage of the massive majority of the citizen. Any failures to exercise such power in the proper ways leads to exclusion, poverty, frustration, aggression, and insecurity. The apparently incapability of the leaders of the government and government people in bureaucracy to deliver much needed services to the huge majority of the citizen, especially a common man, and the subsequent failure of the standard of living of the people, may be understood as a conclusive evidence of failed public policy and reform. For this, all we need is a leader who is ethically and morally honest and must be competent, must have a diversified experience, educated, must belong to a family with a good respect. Because a clean background enjoys a good reputation, he must be a taxpayer with all the assets and liabilities declared since long, with clear will and good intention to change the fate of the nation and people. He must be a practical person with a practical experience, a person who is a nationalist and have no Western interest, a person who is supported by the self or family means of income, a person whose business should not make a conflict of interest once leading. In short, we need a leader who set the tradition of exemplary leadership. These are few things which I have actually noted and I have highlighted and shared it. But there is a lot more in order to share about the public policy, what more needed. We have a Mr. Hassan Khabar, who is an international development consultant and a journalist. Hassan is an international development consultant, a journalist, public policy commentator, a researcher, and also holds a few honorary positions. He is a public figure in Pakistan and has 20 years of national and international experience in public and private sector. He is a former civil servant belonging to Pakistan Administrative Service. He is an MBA from Washington University in St. Louis, USA. Also holds an undergrad degree in engineering. He received executive education from Harvard University and was trained in law, public administration, and leadership from Civil Services Academy and National School of Public Policy, Pakistan. Hassan, I would like to invite you on the dais and please come and share and enlighten us with your views. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, Iftar. It's indeed a privilege to be here for a number of reasons. Of course, as you mentioned, kindly mentioned, our
connection, our relationship go way back. So it's always a pleasure to get in touch. And I'm also in great company. So we have a very learned colleague, Atal Mansoor Saab, who I had the pleasure to know virtually. But thanks to you, I have now met him, and I'm also looking forward to listen to him. And then we also have Dr. Shudar Ali, who was a senior in civil service, a very learned man who taught us many things during his career. So it's a pleasure. But also because of the very platform on which I am invited. In the name of late Jahangir Brother Saab, Allah ko karike rahmat kare. Jahangir Saab, of course, needs no introduction. He had been a great, fiery parliamentarian. उन्होंने जेल काटी जमहूरियत के लिए. जब भी जमहूरियत की बात आई वो सबसे आगे पेश थे. और पर्सनली क्योंकि I belong to Muslim town, he was from Muslim town, so the roots go way back, and I have been an admirer of him for many decades. So it's a pleasure. So coming to the topic, and I try to switch between English and Urdu just to keep it clear. تو میں آج صبح اخبار جب کھولا تو آئی لک ایٹ دی ہیڈ لائنس اور اس میں کئی طرح کے ہیڈ لائنس. این سی او سی نے فیصلہ کیا کہ 31 اگست کے بعد سروسز سیکٹر کو ویکسینیشن کے بغیر کام کرنے کی اجازت نہیں. Then there was another news item about foreign exchange reserves falling down. There was yet another news about EV vehicles and incentives for EV manufacturers. All of these things are manifestation of public policy. So if someone ever wonders what is public policy, you open a newspaper every morning and whatever you see, pretty much 90% of that is a manifestation, direct or indirect, of some public policy. Public policy کو ہم کیسے ڈیفائن کریں؟ بہت ساری اس کی ڈیفینیشنز ہیں, لیکن صرف جو ویورز بھی ہیں, ادھر بھی پارٹیسپینٹس ہیں, وہ تمام چیزیں جو اسٹیٹ افیکٹ کرتی ہے, چاہے وہ قوانین کے ذریعے ہو, ریگولیشنز ہوں, پبلک انویسٹمنٹ ہو, دے آر آل ڈفرنٹ فیسٹس تھرو وچ دا گورنمنٹ کیریز آؤٹ اٹس پبلک پالیسی. سو یہ تو ایک بڑی سمپل بات ہوگی. ناؤ دا ٹاپک از ایون مور انٹرسٹنگ, اینڈ دا ٹاپک از ری تھنکنگ پبلک پالیسی. اچھا, وائی ڈو وی ہیو ٹو ری تھنک پبلک پالیسی؟ And I think that's probably the first question I asked myself. When I heard about the topic, I thought to myself, what is compelling us to change? Right? What is making it essential that public policy needs to change? And I could think of 5 things that compel. وہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم پبلک پالیسی کو ری تھنک نہیں کریں گے تو اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے, for the want of a more pessimistic term. تو ہمیں ری تھنک کرنا ہوگا. یہ 5 ایسی چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جس طرح سے ہم چلتے آئے پچھلے 70 سال میں ہم ایسے نہیں چل سکتے. ہماری پاپولیشن جو ہے وہ 2.5% سے گرو کر رہی ہے, اور ہماری جو ریسورس ہے گورنمنٹ کی, بیکاز گورنمنٹ کا بہت بڑا پارٹ پبلک پالیسی دیٹ از تھرو اٹس ریونیوز, دا منی اٹ اسپینڈز, دا فورگون ریونیو, ایوریتھنگ, وہ ریسورسز کم ہو رہے ہیں. آپ فیڈرل گورنمنٹ کے سارے ریسورسز دیکھ لیں, آپ اس میں سے جو سود کی رقم ادا کرتے ہیں وہ نکال دیں, اور آپ شاید ڈیفینس کا بجٹ نکال دیں. اس کے بعد کچھ نہیں بچتا. لوگوں کی تنخواہیں دینے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے, لوگوں کی پینشن دینے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے, اسٹیٹ اور انٹرپرائزز رن کرنے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے, اور قرضے بڑھ رہے ہیں, ریسورسز کم ہو رہے ہیں, population بھی بڑھ رہی ہے. I think you don't have to be a rocket scientist to see okay where it's headed. So that's one big driver of change. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جو پبلک پالیسی کے پہلے کچھ اسٹیک ہولڈرس تھے, وہ لوگ تھے جو اس میں ایک رول پلے کرتے تھے. عوام بھی کرتی تھی ظاہر ہے ڈیموکریسی کے تھرو, لیکن پالیٹیشینس کرتے تھے, بیوروکریسی کرتی تھی, فوج کرتی تھی. لیکن اب اس پروسیس کے اندر نئے ایکٹرز آ گئے, اور وہ ایکٹرز بھی اب اس پبلک پالیسی کے کام میں اپنا رول مانتے. اس میں سے ایک ہے میڈیا اور ایک ہے جوڈیشری. آپ جب کوئی پالیسی لائیں گے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کل کو یہ کورٹ میں چیلنج نہ ہو.
اس کو میڈیا کیسے دیکھے گا, اس کے اوپر ہیڈ لائن کیا بنے گی, اس کے اوپر ٹاک شو کیا ہوگا, اور کہیں یہ محسوس نہیں بن گئے. تو یہ ایک اور دوسرا بڑا چینج ہے جس کی وجہ سے پبلک پالیسی کے فارمولیشن کے امپلیمنٹیشن کے ڈائنامکس چینج ہوئے. ہمیں جوڈیشری کا, میڈیا کا, جو نئے ایکٹرز ہیں ان کا سوچنا پڑتا. اچھا, تیسرا ایک اس سے بھی اہم چیز ہے اور وہ ہے ٹیکنالوجی. جو وکاس صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, ٹیکنالوجی بھی پبلک پالیسی کو چینج ہے. اور اگر میں اس پہ بات کرتا رہوں تو میں شاید ساری رات بھی بات کرتا رہوں تو ختم ہی ہوگی, لیکن میں آپ کو ایگزامپلس 2-3 دینا چاہتا ہوں. پاورٹی کے سرویز ہوتے ہیں, لوگ جاتے ہیں گھر گھر, آپ کی نیشنل سوشل اکنامک رجسٹری ہے, ان کی وہ لیتے ہیں, پاکسیز بناتے ہیں, آپ کے گھر میں کیا ہے, کیا انکم ہے. یہ ایکسپینسو سروس. لیکن اب بعض ریسرچر ایک اور کام کر رہے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ٹیلی کام کے ٹاور سے ڈیٹا لیتے ہیں اور وہ ڈیٹا سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کے موبائل فون اس ٹاور کے ساتھ زیادہ ٹائم کے لیے لنک ہوتی ہیں. کیا وہ 2000 کا فون ہے, کیا وہ 2 لاکھ روپے والا فون ہے, کیا وہ 50,000 کا فون ہے, اور وہ آپ کو اس ڈیٹا سے پاورٹی اسپریڈ کا بہت اچھا ایک میپنگ دے دیتے ہیں. آپ اسے ٹارگیٹ تو نہیں کر سکتے کہ یہ ہم نے محمد بشیر کے گھر جا کر اس کو ایک کیش ٹرانسفر کرنا ہے, لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ایریاز میں غربت زیادہ ہے, کون سے ایریاز میں انکم زیادہ ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے. اچھا, اسی طرح ہم جی ڈی پی ہر سال کیلکولیٹ کرتے ہیں. میں ایک پروجیکٹ کا پارٹ ہوں خیبر پختونخوا میں. ابھی ہم نے ایک اسٹڈی کرائی آج شام, اس کی بلکہ 9 سے 6 بجے. اس میں ہم نے جو یہ رات کی جو ڈیٹا سیٹلائٹ سے نظر آتا ہے لائٹس کا لومینوسٹی, اس سے جی ڈی پی کیلکولیشن کی ہے. اور وہ دنیا میں ہو رہا ہے کہ آپ وہ کیلکولیشن کرتے ہیں جو ٹرائی ٹو کیلکولیٹ ہو کہ ہاؤ دس جی ڈی پی از کائنڈ آف ڈسٹریبیوٹیڈ. اچھا, اور آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سیٹلائٹ کا ڈیٹا تو آپ کا پچھلے 10-15 سال کا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا مردان کا جی ڈی پی کم ہو رہا ہے, پشاور کا جی ڈی پی بڑھ رہا ہے, یہ کیا وجہ ہے. تو آپ اس لیول پہ جا سکتے ہیں. پراپرٹی ٹیکس کے اندر ایک کام ہو رہا ہے, اس کے اندر آپ سیٹلائٹ ڈیٹا سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس کا کورڈ آپٹیکل ڈیپتھ نکالیں کہ اس کا کورڈ ایریا کیا ہوگا, اس میں کتنی پراپرٹی ٹیکس کی کلیکشن ہونی چاہیے. اس طرح کی ان گنت جو ہے وہ مسائلیں موجود ہیں. سو ٹیکنالوجی جو ہے اس سے بھی یہ پبلک پالیسی اور پبلک ایڈمنسٹریشن کا فنکشن ہے, یہ بالکل اب تبدیل ہو. اچھا, چوتھی چیز ہے سٹیزن وائس, میری آواز, آپ کی آواز, آپ کی آواز. اور سوشل میڈیا نے اس کو انیبل کر دیا. اب کوئی اس ملک کے اندر ہر قسم کا جرم پچھلے 70 سال میں ہوتا ہے, ڈیولپنگ ملکوں میں ہوتا ہے, ڈیولپ دنیا میں بھی ہوتا ہے, ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ایک ہولناک واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا اور کیسے اس کے اوپر سٹیزنز موبلائز ہوئے, کیا پریشر پڑا, اور ہر چیز کے اوپر لوگ سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں, اپنی آواز بلند کرتے ہیں. تو یہ ایک چوتھا بڑا چینج ہے جس کی وجہ سے پبلک پالیسی پہ بہت طرح کے نئی طرح کے پریشرز پڑ رہے ہیں. اور 5ویں اور آخری چیز جو میری نظر میں ہے وہ ہے پرائیویٹ سیکٹر. یہ دنیا کا جو آپ یہ سفر ہے اس کو آپ پرائیویٹ سیکٹر آگے لے کے جاتے. ایک زمانے میں یہ پبلک سیکٹر لے کے جاتے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 200-400 سال قبل جو میڈیسن کی فیلڈ میں جو ترقی ہوتی تھی, جو کلچر میں ترقی ہوتی تھی, وہ بادشاہ کروایا کرتے تھے. بادشاہ کے طبیب ہوتے تھے, ان کے ڈاکٹرز ہوتے تھے, وہ ان کو لے کے چلتے تھے. لیکن اب اٹ از آل اباؤٹ کنزیومرزم, اٹس آل اباؤٹ پرائیویٹ سیکٹر. جو پبلک سیکٹر یونیورسٹی اچھا ہونا چاہتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں لمز بننا چاہتی ہوں. جو ہاسپٹل اچھا ہونا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں آغا خان ہاسپٹل بننا چاہتا ہے. سو وی لک اپ ٹو the private sector for service delivery. And that's the kind of ambition now people have within government in many places. So یہ 5 بڑے factors ہیں which is shaping public policy. اچھا, اب یہ 5 جب factors ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پہلی بات ہم نے کی کہ جی ہم population بڑھ رہی ہے اور resources کم ہیں. اس کا implication یہ ہے کہ governments کو اب efficient ہونا پڑے. اب یہ جو فوج ظفر موج لوگوں کی ہوتی ہے کہ نائب قاصد اور یہ اور چیزیں اور پٹواری اور وہ کہ آپ اس قدر تنخواہیں دے رہے ہیں, اس کے پیسے نہیں لیں گے, پینشنز کے پیسے نہیں لیں گے. پی آئی اے نے پچھلے 20 سال کے اندر جتنا نقصان کیا ہے اگر آپ اس کو نکال لیں, میں نے کیلکولیٹ کیا ان پیسوں سے یو کین بائی میجورٹی شیئرز آف ٹرکش ایئر لائن. جسٹ اے کمپیریزن, دیٹس دا کائنڈ آف منی وی ویسٹ. وہ ویسٹیج کی گنجائش اب نہیں رہے گی.
हमारा टोटल डेट टू जीडीपी अब करीबन 100% के करीब है, या पब्लिक डेट में हमारा कोई 6% के करीब है। तो ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा। पॉपुलेशन अगर इसी तरह बढ़ती रहेगी, रिसोर्सेज कम होते रहेंगे, तो गवर्नमेंट को अपने आप को एफिशिएंट करना पड़ेगा, ट्रिम डाउन करना पड़ेगा, वरना इन्वेस्टमेंट के पैसे नहीं बचेंगे। तो ये पहली इम्प्लीकेशन है। दूसरी हमने बात की कि अब पब्लिक पॉलिसी के नए शेपर्स आ, जुडिशरी भी इस गेम के अंदर है, मीडिया भी इसका एक स्टेक होल्डर है। इसका मतलब है कि अब पब्लिक पॉलिसी बनाने का प्रोसेस पार्टिसिपेटरी होना पड़ेगा, आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। आप ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के पॉलिसी नहीं बना सकते। कल को अखबार में खबर लगेगी कि ये पॉलिसी क्यों, आपने इस चीज़ पे ड्यूटी की छूट क्यों दी, आपने फलानी कंपनी के थ्रू क्यों फैसला किया, आपने खुद ये सर्विस क्यों डिलीवरी नहीं की, आपको अदालत बुला के पूछेगी। और पूछा, हमने ये देखा, राइट और रॉन्ग दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। वो आए, उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को आपने क्यों इतने पैसे चार्ज करने दिए, वैक्सीन इंपोर्ट करने की प्राइस क्यों फिक्स की गई, हर चीज़ के ऊपर जवाब होना पड़ेगा। तो पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन का प्रोसेस पार्टिसिपेटरी और ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। ये दूसरा बड़ा चेंज है जो आएगा। तीसरा ड्राइवर है टेक्नोलॉजी। इसका रिजल्ट ये है कि टेक्नोलॉजी से भाग नहीं सकेगी। हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। कहीं कहीं ये है, लेकिन अभी भी अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स खोलें, आप गवर्नमेंट के पोर्टल्स खोलें, दे आर स्टिल ऑपरेटिंग इन लाइक 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी का माइंडसेट नहीं चलेगा, क्योंकि लोग अब यूज टू हैं। मैं अमेजोन पे जाकर ऑर्डर करता हूँ, गाने हम स्पॉटिफाई पे सुनते हैं, मूवी स्ट्रीम हम नेटफ्लिक्स पे करते हैं, बिल्स हम ऑटो ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब हमने सरकार के साथ कोई चीज़ करनी होती है तो फिर हमें वॉक करके जाना पड़ता है। हम कहते हैं कि नहीं, हमसे परमिट लेने आए हैं, ये ऐसे नहीं चलेगा, इस वजह कुछ चीज़। चौथी चीज़ है सिटीजन वॉइस और सोशल मीडिया। ये वक्त के साथ बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। इसका मतलब है कि पब्लिक सेक्टर की स्क्रूटनी बढ़ती जाएगी, सर्विस डिलीवरी की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएंगी, तो उनको ऑपरेट करना पड़ेगा उस प्रेशर के अंदर। और पांचवी चीज़ ये है कि प्राइवेट सेक्टर क्योंकि अब फ्रंटियर को ड्राइव कर रहा है, तो हुकूमतों को, पब्लिक सेक्टर को, पब्लिक पॉलिसी में प्राइवेट सेक्टर को जगह देनी पड़ेगी। और अगर आप जगह नहीं देंगे तो वो जगह लेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आज से 25-30 साल पहले शहर के अंदर, किसी भी बड़े शहर के अंदर एक दफ्तर होता था। आज उस दफ्तर को लोग भूल चुके हैं, लेकिन उस ज़माने में वो दफ्तर बड़ा अहम होता था। कोई बड़ा अहम आदमी था, शहर के जो उमरा, शहर के रईस, शहर के मुख्तलिफ लोग उसको फ़ोन करते थे। उसका नाम था DE, डिविजनल इंजीनियर। वो TTCL का एक एहलकार होता था, जो कि आपका अगर ताल्लुक था तो वो आपको जल्दी डिमांड नोट इशू कर दिया करता था। फिर डिमांड नोट के बाद आप 9 महीने की जगह आते थे, फिर पैसे जमा कराते थे। तो कुछ 10-10 साल भी लोगों को फ़ोन लाइन लगवाने थे। आज ये हाल है कि हर ID कार्ड के ऊपर 5-5, 4-4 सिम्स रजिस्टर। प्राइवेट सेक्टर जस्ट पुश इट्स स्पेस। ये होगा तो अगर पब्लिक सेक्टर ये स्पेस खुद ओपन अप करेगा, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट है, तो वो चलेगा। अगर नहीं होगा तो रेलेवेंट होगा। एजुकेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर आ गया, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने जगह दी, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम चलाती है। एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म का हुकूमत पंजाब में एक प्रोग्राम चल रहा था। एक दिन उन लोगों ने वैसे ही सर्वे, उन्होंने कहा कि किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कैसे हो सकता है, मेरे के बच्चे दौर के अंदर में पढ़ते हैं। किसी ने कहा जी एडिसन में, किसी ने कहा जी मेरी तो बच्चे भी डिगन हाउस में पढ़ते हैं। फिर वो नीचे गए, फिर वो क्लरिकल स्टाफ के पास गए, वो सपोर्ट स्टाफ के पास गए। इफ मेमोरी सर्व मी राइट, फाइनली पूरे दफ्तर में सफाई करने वाले, ड्राइवर, सब ने कहा जी हम सरकारी स्कूल में नहीं भेजते। एक शायद बंदा मिला गालिबन, उसने कहा जी मैं भी बड़ा तंग हूँ, मैं भी बच्चे निकालना है। तो गवर्नमेंट का इतना बड़ा एक सिस्टम है और वो इररिलेवेंट हो चुका है। वो पता नहीं लोगों के साथ क्या करें। जब आप किसी से बात करते हैं, लोगों से करते हैं, दे आर लिविंग इन डिफरेंट वर्ल्ड। तो ये प्राइवेट सेक्टर को जगह देनी पड़ेगी। तो ये 5 मेरे ख्याल में बड़े पहलू हैं जिसमें पब्लिक पॉलिसी को रीथिंक करना पड़ेगा। अब क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और ये प्लेटफॉर्म चेंबर के साथ है, तो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर को नहीं है। जब ये चेंज होगा, चाहे गवर्नमेंट इसको एम्ब्रेस करे या गवर्नमेंट को ये पुश कर दिया जाए, जब पब्लिक पॉलिसी का ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होगा, तो हाउ
should the private sector be at? What are the opportunities for the private sector? Yeah, I think there are 3 or 4 things. Number 1, और मैं बात थोड़ी जनरल करूँगा पर आपको एग्जांपल दूँ, that private sector should act as a trailblazer. Trailblazer कौन होता है? Trailblazer जो होता है जो आगे जाए और रास्ता दिखाए कि जी इधर को रास्ता नहीं करना. हमारी जैसी जो हुकूमतें हैं डेवलपिंग मुल्कों की, वो ये नहीं समझ सकती कि हमने पब्लिक पॉलिसी से क्या चेंज लाना है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, अब बहुत सारी ड्यूटीज़ की छूट मिल गई प्राइवेट सेक्टर, लेकिन लातादाद जगह पे नॉन टैरिफ बैरियर्स. मसलन मुझे याद पड़ता है जब हमने इस पर स्टडी की तो हमने देखा कि क्यों डायरेक्टली हम इस वाली पोर्ट से नहीं भेज सकते जहाँ पे हमारा बॉर्डर है, क्योंकि उसका कोई टेस्टिंग फैसिलिटी है वो कायम नहीं. इस तरह की कई मसाइल है. तो तीसरा ये है कि बिजनेसेस को विन विन प्रोपोजिशन क्रिएट करना चाहिए. इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं कर सकते कि आप जाएं और आप कहें हुकूमत से कि हमारी टैक्स कम करें. तो हर बंदा चाहता है टैक्स कम करें. आपने उनको बताना है कि आप टैक्स कम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इतनी एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करेंगे. आप टैक्स अगर 17 से 13% कर देंगे तो हमारी सेल इतनी बढ़ेगी और आपकी टैक्स कलेक्शन एक्चुअली बढ़ जाएगी. और लास्ट बात ये है कि इस सब को करने के लिए आपको जुल्फ़िकार साहब जैसे इन जैसे प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो चेम्बर्स ड्राइव करें, जो प्राइवेट सेक्टर ड्राइव करें. यू हैव टू इन्वेस्ट कि ये क्या पॉलिसीज हैं जिनको हमें देखना है, ये कैसे हम ट्रेल ब्लेजर बनेंगे, गवर्नमेंट से कैसे डायलॉग करेंगे. तो मैं समझता हूँ कि उसमें थिंक टैंक्स का बहुत बड़ा रोल है. और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया है और ये जो इवेंट्स कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसके इंशाल्लाह बहुत हौसला अफजा नताइज होंगे और ये दूसरे लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट होगी. शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. सान, आपने बड़ा इन लेंथ आके पब्लिक पॉलिसी को डिस्कस किया. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपने कहा कि इट शुड बी अ विन विन थिंग. विन विन का होना बहुत ज़रूरी है इस माशरे में, क्योंकि अगर विन विन नहीं होगी तो इसमें या प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश करेगा या पब्लिक सेक्टर फ्लरिश करेगा. तो हमें दोनों को फ्लरिश करवाना है. और पब्लिक पॉलिसी का जब हम री थिंकिंग की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर ज़रूर आके लीड करे कि स्ट्रॉन्ग पब्लिक पॉलिसी होगी, आप उसको रेगुलेट करेंगे तो बहुत आसानी से प्राइवेट सेक्टर को भी आप रेगुलेट कर सकेंगे और उसको आप मौका भी देंगे कि इट शुड बी अ विन विन थिंग फॉर प्राइवेट सेक्टर एज वेल, फॉर न्यू स्टार्टअप्स, फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स, कि वो आके उस इंडस्ट्री में करें. क्योंकि आप देखें ना, जिन इंडस्ट्रीज के अंदर कार्टल्स बने हुए हैं वहां पे कोई नया बंदा शामिल ही नहीं हो सकता, उसकी एंट्री नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बैरियर लगा दिया हुआ है कि जी हम ये 20 लोग हैं, ये 30 लोग हैं या 50 लोग हैं. नया बंदा नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट से आ जाए. पाकिस्तान में आई ऑलवेज कोट दिस थिंग कि पाकिस्तान में जितने लोग अमीर हुए हैं, अगर आप उनकी बैकग्राउंड देखें ना, दैट इज लैक ऑफ पब्लिक पॉलिसी. कि या वो बिजली चोरी करके हुए हैं, या वो गैस चोरी करके हुए हैं, या वो टैक्स चोरी करके हुए हैं, या वो एसआरओस के थ्रू हैं. आप बैकग्राउंड देखें, यहाँ लोन माफ करवा के हुए हैं. आप लोगों का 1 पेजर बैकग्राउंड हिस्ट्री निकाल के देख लें कि पब्लिक पॉलिसी का उन्होंने मिसयूज किया है. और एट द एंड ऑफ द डे आज उन्हीं लोगों की इंडस्ट्री है, उन्हीं लोगों को. और ये जो प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं जब पब्लिक पॉलिसी में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस कि देखें, अगर पीआईए का आपने जिक्र किया, पीआईए जैसा तो इदारा ही कोई नहीं था जिसने सारे मुल्कों की एयरलाइन को एस्टेब्लिश किया. क्या वजह है कि पीआईए का आज न्यूयॉर्क में फ्लाइट बंद हो गई है और किस प्राइवेट एयरलाइन की फ्लाइट शुरू हो गई है? किन लोगों ने आके मैं आई डोंट वांट टू स्टेट नेम, कि कौन लोग हैं ऐसे पॉलिसी एंड डिसीजन मेकर जिन्होंने आके तमाम ऐसे इदारों को, तमाम गवर्नमेंट्स में, ये देखें, दिस इज अ फेलियर ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स, किसी एक गवर्नमेंट का नहीं है. ये आप बैकग्राउंड जाके देखें, एक गवर्नमेंट के लोग दूसरे गवर्नमेंट के साथ आज भी मिले हुए हैं. बैक एंड पे पर्दे के पीछे जाके देखें, एक दूसरे के साथ दे आर स्टेक होल्डर्स.
लेकिन क्योंकि आप और मैं तो we are not in part and parcel of any industry, ना हमारी ज़मीनें हैं, nor we are feudals, nor we are industrialists, ना हम capitalist हैं, तो हम तो we are just there to think about कि बेहतरी कैसे लाई जा सकती है. तो इसमें we would like to have a input from honorable अतर साहब, अतर मंसूर साहब. अतर साहब का मैं brief introduction करवाता चलूँ. Atar Mansoor Sahab is a research fellow at the Hong Kong University of Science and Technology. He has served in the public sector of Pakistan since 1998 in various capacities in the government of the Punjab and federal government. He holds a PhD in public policy from the Hong Kong University of Science and Technology. He has MS in strategy and leadership from the Michigan State University, MBA from the National University of Singapore, MBA from LUMS. His areas of specializations are industry policy, industrial policy, technology and innovation policy, Belt and Road Initiative, development policy and using evidence for better policy design. He is also the master trainer for Harvard Kennedy School's building capacity for using research evidence. We are honored to have you, sir. ये जो प्लेटफॉर्म के अंदर ये सारा इनिशिएट किया ना, इसमें एक वजह ये भी थी कि आई एम आल्सो अ एलुमनाई ऑफ हार्वर्ड कैनेडी स्कूल, बिकॉज 2016 में मेरा जब एडमिशन हुआ, आई डिड माय स्पेशलाइजेशन इन पब्लिक पॉलिसी एंड ग्लोबल लीडरशिप. सो उससे पहले मेरा कोई पब्लिक पॉलिसी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था, बट जब वहाँ पे उन्होंने मेरे माइंड के अंदर ये फिट किया कि पब्लिक पॉलिसी इज द की थिंग to run the government, governance and everything. तो उसके बाद फिर हमें आया कि यार पब्लिक पॉलिसी से चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए, और वहीं से फिर मैंने लिखाई पढ़ाई का काम, वालिद साहब मुझे कहते होते थे कि यार तुम जरा पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो, पर उससे ज़्यादा मैं पढ़ता नहीं था. पर उसके बाद फिर मैंने I got another scholarship. I did a specialization in transformational leadership from a Said Business School, Oxford University. So we have quite a match. MBA मैंने किया Ohio State से with 3 majors. तो वो फिर पढ़ाई लिखाई की तरफ आगे फिर लेके चले. Sir, I invite you to come on the dais and share your and enlighten us with your views about public policy. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the face-to-face participants and all of those who are watching me in the virtual world. I am honored to be here on the platform of Lahore Chamber of Commerce and Industry. Just as Hassan Sahab has pointed out, I am honored because Hassan Sahab is a senior, Dr. Shujaat Ali is a senior in civil service, and I am both of them. Shujaat Sahab has retired and Hassan Sahab has resigned, but both of them have acted as inspiration for me. So Hassan Sahab आपसे virtual मुलाकात ज़रूर हुई, लेकिन आप मेरे लिए 2-3 साल से एक inspiration, and I appreciate your efforts, what you are doing from the perspective of improving governance, improving public policy and transforming Pakistan. Dr. Sahab जो है वो मेरी inspiration है 20 साल से. So he's the one who actually motivated me to study, to improve myself academically, to enhance my professional competencies. He's also, mashallah, a senior in HSN College, quite senior to me in HSN. I'm an HSonian, तो उसके हाथ से भी उनके साथ एक double relationship इस तरह है कि civil service का platform और school का platform, और उसके बाद एक inspiration जो उन्होंने मेरे लिए. So coming to the topic now. Hassan Sahab has said most of the things, और Zulfikar Sahab ने भी बहुत सारी बातें करनी हैं, and I'll shift again like Hassan Sahab between English and Urdu to emphasize certain points which I think are extremely important for the audience. पहले तो definition जो उन्होंने बताई, I think it's a classic definition, and I as an academician define policy as conceiving of a vision for public welfare and then putting means and allocating resources for achieving that vision. So policy is all about vision, and that's being to, that's a classic kind of academic interpretation of policy, and it can
go into the world of practice as well. میری جو حسان صاحب سے میں بات کر رہا تھا فنکشن شروع ہونے سے پہلے کہ my training during my PhD career has been done in a very creative way. I have not been raised by my supervisory team as a pure theoretician who can just produce theory for improving science or scientific knowledge, which is publicly available stock of knowledge. Science is publicly available stock of knowledge, which can be tested through some methodology. I have been trained during my PhD to straddle the world of policy and theory. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پالیسی کی ری تھنکنگ ہے پاکستان کے پرسپیکٹو میں، اس کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جو ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہمیں تھیوریٹیشین کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ کیسے تھیوری جنریٹ کر رہے ہیں اور پالیسی کے ورلڈ کے اندر اس کی پریکٹس کیسے کی جا رہی ہے، کیپنگ ان ویو دا کانٹیکسٹ. جو کانٹیکسچوئل ویریبلز ہوتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے گورنمنٹس کی، سوسائٹیز کی، کمیونٹیز کی، وہ ایبسنٹ ہے پاکستان کے لیے. اینڈ اٹس سو مچ ایبسنٹ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سروس میں ڈاکٹر صاحب سے میں نے انسپریشن لی. پولیٹیکل ارینا میں جو میری سب سے بڑی انسپریشن ہے وہ لی کوان یو آف سنگاپور. اینڈ وین آئی سی ہز وے آف گورننس اینڈ دا وے ہی enacted public policies for the benefit of a small, tiny red dot of only 706 square kilometers with no resources. کوئی کیوڑا کوئی سالٹ مائنس نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی ہمالیہ کے پہاڑ نہیں ہے، کوئی ساحل سمندر اس طرح کی نہیں ہے جیسا کہ اریبین کی کوسٹ لائن یا اریبین سی کی یا گوادر کی ڈیپ سی پورٹ کو ہم ہوسٹ کرتے ہیں. کوئی جنگلات نہیں ہے ایسے جیسے ہم جن جنگلات کی باتیں کرتے ہیں جو اب ختم ہو چکے ہیں اور ہم نے ضائع کر دیے. کوئی اور ایسے ریکوڈک کے، کوئی جپسم کے، کوئی ایسے ان کے پاس وسائل نہیں ہے. اٹ از ون آف دا ریچسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. اور جب میں اس کو کوٹ کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ آرگیو کرتے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا ملک اس کو ٹھیک کر دیا تو کیا کارنامہ کیا. تو ان کی انفارمیشن کے لیے میں آگے سے ایک آرگیومنٹ پیش کرتا ہوں جو ان کے لیے پاکستان میں رہتے ہوئے ضروری ہے کہ کان کھول کر اور آنکھیں کھول کر اس لٹریچر کا مطالعہ کریں کہ جب ڈینگ شاؤ پینگ چائنا میں 1979 کے ریفارمز میں اپنی انسپریشن لی کوان یو سے لے کر، چائنا جیسا ملک اگر اپنے ڈیلیگیٹس اور ڈیلیگیشنز کو سنگاپور بھیج سکتا ہے یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ان کی گورننس اور ان کے پرنسپلز کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے پاس اتنا کچھ آ رہا ہے. Because it was growing like anything in 80s. اور 80s کے اینڈ میں it was purely a transformative state جس کو لیگل میں ٹرانسفارم کر چکا. So we need to understand کہ یہ جو ری تھنکنگ کا کانسیپٹ ہے، حسان صاحب has very I think aptly put these 5 principles ٹیکنالوجی سے لے کر ڈسکرسو انوائرمنٹ جو ہے ہماری، اس کے علاوہ ہمارا جو پرائیویٹ کانسیپٹ ہے کہ مارکیٹ ٹائپ میکینزمس ڈپلوائے کر کے آپ مارکیٹ کو انوالو کریں. پھر آپ کی جو اوور آل انوائرمنٹ کے اندر جو کتنے پلیئرز آ گئے ہیں، ایکٹرز آ گئے ہیں، ان کو کیسے آپ نے لے کے چلنا ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ. میں کیونکہ ٹیکنالوجی اور انوویشن اور انڈسٹریل پالیسی میں ایکسپرٹیز رکھتا ہوں تو میں حسان صاحب کے سارے پوائنٹس کو اپلائی کرنا چاہوں گا پاکستان پہ. اور ہم کھڑے بھی چیمبر کے پلیٹ فارم کے اوپر ہیں اور ہم انڈسٹریل گروتھ کو انتہائی ہمارے جو ہمارا اکنامک گروتھ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ انڈسٹریلائزیشن. ڈاکٹر شجاعت ایز اے مین سیکرٹری انڈسٹریز اینڈ he'll support me in this definitely. I'm sure کہ انڈسٹریلائزیشن کی اس ملک میں کوئی سالڈ امپلیمنٹیبل ایکسیکیوٹیبل پالیسی بنائی نہیں گئی. تھیری میں شاید کاغذوں میں سیکرٹریٹ میں بہت ہی اچھی پالیسیز بنی پڑی ہوں لیکن ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا. اور میں اس کو اپنے پرنسپل جو جیسے حسان صاحب نے بتایا میرے 3 I usually make 3 points. So I usually make for my audience 3 points just to emphasize what I'm trying to say. اور وہ میں 3 points سے جب لنک کروں گا تو I'll tell you کہ انڈسٹریلائزیشن کی پالیسی کیسے اس ملک میں ری تھنک کی جا سکتی ہے. Just narrowing down on what حسان صاحب نے said. دیکھیے سب سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو اب انوائرمنٹ ہم جس میں رہ رہے ہیں اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے باٹم اپ انڈرسٹینڈنگ آف تھنگس. باٹم اپ اسٹیٹ دنیا میں لیڈ کرتی رہی ہے ہسٹوریکلی فار پبلک پالیسی، فار کنسیونگ آف اے ویژن اینڈ دین پٹنگ دوز مینس ٹوگیدر فار اچیونگ دیٹ ویژن. دیٹ واز اے ٹریڈیشنل ماڈل، ٹاپ ڈاؤن اپروچ. جو انہوں نے ڈیلیبریٹو انوائرمنٹ کی بات کی جہاں پہ میڈیا آ گیا، جوڈیشری آ گئی ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرز آ گئی، وہاں پہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ
کہ ہمیں ایسے چینلز موڈز آف کمیونیکیشن اوپن کمیونیکیشن بنانی پڑے گی کہ جہاں سے ایکسچینج آف انفارمیشن اور کمیونیکیشن ہو اور پالیسی ڈیفائن ہو سکے, صرف فارمولیشن کے لیے نہیں بلکہ امپلیمنٹیشن اور ایویلیویشن کے لیے. پالیسی سائیکل کی 4-5 امپورٹنٹ سٹیجز ہیں جن میں ایجنڈا سیٹنگ سے لے کے ایویلیویشن تک ایک پوری پالیسی فلو کرتی ہے, اور اس کو فلو کرنے کے لیے آپ کے نان اسٹیٹ اور اسٹیٹ ایکٹرز کا اکٹھے آنا انتہائی ضروری ہے. سو ری تھنکنگ فرام دیٹ اینگل از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اس میں جو میرا کیس اسٹڈی ہے, جو میرا اسپیشلائزیشن ہے, وہ انوویشن اور ٹیکنالوجی. اگر آپ دنیا میں دیکھیں جو موسٹ انوینٹو کنٹریز ہیں دنیا کی, جن میں اسکینڈینیویا ہے, فار ایسٹ کے بہت سارے ملک ہیں, ساؤتھ کوریا ہے, سنگاپور ہے, ہانگ کانگ ہے, چائنا کی ایک سٹی ہے شنجن, اس کی میں ابھی بات کر رہا تھا سان صاحب سے ایونٹ سے پہلے, کہ اٹس این ایکسٹریملی انوویٹو سٹی. اٹ واز این امیٹیٹو اکانومی developed as a special economic zone by Deng Xiaoping and then converted into one of the most innovative cities in the world right now. اور ان کا آپ جی ڈی پی دیکھیں, پاکستان سے آلموسٹ 1.25 گنا سے 1.5 گنا ان کا جی ڈی پی ہو گیا ایک شہر کا. ہم ہانگ کانگ سے جب وہاں ٹریول کرتے ہیں تو it's mind boggling the way they are growing and the way they are thinking and rethinking their public policy. So اس کے لیے ہم ڈسکسیو انوائرمنٹ میں کیا کریں. ہم چیمبر پہ آئے ہیں, چیمبر کے لوگ, چیمبر کے ممبرز, چیمبر کی انڈسٹریلسٹ جو مختلف انڈسٹریز میں, آپ یہاں سے اسٹارٹ کر دیں کہ جو آپ کی ٹریڈیشنلی کمپیٹیٹو سیکٹرز تھے ان کو کور بنا دیں, پلر بنا دیں. آپ ایگرو میں, ایگریکلچر انڈسٹری آپ کی ہے, بیس ہے اکانومی کی بہت بڑی, آپ ایگرو بیسڈ انڈسٹری کو اٹھانے کی کوشش کر دیں, اس کی ڈسکرسو انوائرمنٹ, اس کی ڈیلیبریٹو انوائرمنٹ کر دیں. آپ کے ٹریڈیشنلی سیکٹرز تھے اسپورٹس کے, سرجیکل انسٹرومنٹس, لیدر, ٹیکسٹائل, سارے سفر کر رہے ہیں. Why? Because you have not taken people on board to understand the new realities of the world. آپ نے ایکسپورٹ کمپیٹیٹو اکانومی بننا ہے, کیسے بننا ہے؟ آج اسرائیل بوسٹ کرتا ہے دنیا کی 13ویں موسٹ کمپیٹیٹو اکانومی وہ ہو گیا, ہم 120 پہ کھڑے ہیں. NCR بزنس اسکول نے جو گلوبل انوویشن انڈیکس کیا ہے, اور اس کے لیے میرا ایک انٹریکشن ہوا جارجیا ٹیک کے ایک پروفیسر سے, مارک زیکری ٹیلر سے. He was shocked to see کہ اس کی کریٹو انسیکیورٹی کی تھیوری پاکستان پہ اپلائی نہیں کرتی, کیونکہ اسرائیل کے لیے ان کی تھیوری یہ ہے کہ اسرائیل کو ایکسٹرنل تھریٹس اتنے زیادہ تھے کہ اس نے اپنے آپ کو انوویٹو کر کے بچانے کی کوشش کی, اور وہ کہتے ہیں پاکستان ٹوٹ چکا ہے پھر بھی انوویٹو نہیں بن رہا, بیکاز دے آر ناٹ تھنکنگ اینڈ ری تھنکنگ. اور انڈسٹریلائزیشن کے بغیر ہم وہ نہیں کر سکتے. پہلا ایک ڈیلیبریٹ. سیکنڈ جو میرا آرگیومنٹ ہے وہ ہے امپلیمنٹیشن. میں نے کیونکہ لی کوان یو کی بات کی تو I refer back. ایک کہانی میں نے سنی ہے, I don't know how much truth is in that story, but someone who shared that story, I trust him more. Right? He or she was telling on an open forum that General Zhao Haq during 80s, just as Deng Xiaoping used to send a number of delegations went from China to Singapore to understand their economic growth model, unke principles, meritocracy se leke transparency se leke accountability. تو ان صاحب نے یہ بتایا ایک پبلک فورم پہ کہ جنرل ضیاء الحق نے 1980 کی دہائی میں سنگاپور اسی طرح ایک ڈیلیگیشن بھیجا اور بات کی, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کہ اس حوالے سے کہ ہاؤ ڈڈ they achieve that miracle, how did they achieve that mind boggling growth from a tiny city state. So Lee Kuan Yew smiled and told the delegation that I learned it from you. The only difference between you and me is that I am a solid, robust implementer. You might have the top line policies, the top line bureaucracy, and everyone at the top of their whatever, expertise and skill, but you put them on papers, you cannot bring that, translate that into reality. So agar aap Lee Kuan Yew ki autobiography padhein, from third world to first world, you're going to realize how solid implementer it was. So ye jo implementation is the toughest part. جب business school میں پڑھا, I went to LUMS, I went to Michigan State, I had the flavor of both. North America میں one of the top schools and Pakistan میں one of the top schools. اور ہمیں جب وہ ٹرین کرتے تھے تو ہمیں وہ کہتے تھے you should be collector of talents. ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی collector of talents کیا ہے. کہتے ہیں what does that exactly mean? کہ آپ کو as a manager, as a business, as an MBA, سانسا میں بھی MBA, he will bear me out on this, کہ آپ کی ایکسیکیوشن آپ کی ٹیم سے ہو. And you should be able to attract the best talent around you and build a team which should translate your vision into reality. اور ہمیں یہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ we would have
I have been at the secretariat, PND में मैंने काम किया है, मैंने अपनी सर्विस के अंदर, सर्विस से बाहर, डेपुटेशन पे, DM ऑफिस के अंदर, PM सेक्रेटेरिएट में पॉलिसी मेकिंग. We have brilliant ideas on paper, but we do not take the hard practical realities into account and the contextual variables जो अभी हम डिस्कस कर भी चुके हैं पहले कि वो जो कैसे चेंज रहेंगे और कैसे इस पॉलिसीज को challenges को. And lastly, I think the most important thing, and I stress, bold, italicize and underline, it is evidence and data analysis. Why do I say that? Because having lived in few of the most developed countries of the world, having served in public sector of Pakistan, having been to academic institutes, having straddled the world of policy and theory, I realize that we lack that expertise to analyze data, whether it is quantitative. I'm not talking about hardcore econometric regression models. You don't need them always. I'm talking about maybe qualitative studies. If people are comfortable with it, collect the data, analyze it, and then frame your response. Orange train चलनी है, तो कितनी traffic कम होगी, कितनी ज्यादा होगी. I don't see that in all open public forums. Why? You put your vision of public infrastructure, urban city management into reality without understanding what data should back your decision. तो दुनिया जो है ना, वो evidence के जरिए पॉलिसी को डिजाइन करती है. हांगकांग में वैक्सीनेशन की हेजिटेंसी है. मैं ये लास्ट बात करूंगा और खत्म करूंगा क्वेश्चन आंसर और कमेंट्स के लिए. One of the richest cities in the world, richest, almost 8 million population, only 2 million vaccinated. While I was there during this COVID year, जब से नवंबर दिसंबर 2019 से या मैंने लास्ट ईयर वहाँ बहुत टाइम गुजारा. इस साल भी शूज के कुछ महीने और गुजार के फिर मैं पाकिस्तान आया. मैंने I tried to understand that why are they not going for vaccination? And I realized कि उनकी public policy implementation SARS-CoV-1 में इतनी solid थी. They don't want to get vaccinated. What was it? वो जो SOPs थे policy पे इतने अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए, उनकी population को समझते हुए, social distancing को समझते हुए, mask wearing को समझते हुए, hand sanitizer. कि आज 11 साल के बाद एक नया pandemic टूटा है दुनिया में, and they have been able to manage it without vaccination. I am not advocating vaccine hesitancy. I'm not at all advocate of not going for vaccine, but I'm trying to give you an idea how great nations, how great people, and how people who want to really do something for themselves and their country, they translate their vision to reality. And that is the reality we need to think, rethink, and dream. Thank you very much. Thank you very much, Akhtar sir, for giving us such a knowledgeable thoughts on rethinking public policy. 2018 में मैं जब केप टाउन गया, so I got a scholarship at University of Cape Town. So I got to know कि वहाँ पे पानी नहीं है और पानी खत्म हो गया था एक टाइम पे आके. अब पीपल आर वेरी केयरफुल अबाउट यूजिंग द वाटर. और उधर जो पानी आता है यानी नलका खोले तो ऐसे हल्का सा शावर सा आता है एंड यू हैव टू वॉश योर हैंड. दुनिया के अंदर 2 ऐसे मुल्क हैं और 2 ऐसे बड़े शहर हैं जिधर पानी खत्म हो गया था ऑलमोस्ट. एक ने बहुत ज्यादा शोर मचाया कि हमारा पानी खत्म हो रहा है, एक ने शोर नहीं मचाया. साओ पालो एंड केप टाउन. केप टाउन में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की, पानी जा रहा है, पानी जा रहा है. तो अल्लाह ताला ने एंड में बरसात कर दी, बारिशें हुई, वहाँ पे पानी आ गया. बट उन्होंने अपने नेशन को थ्रू पब्लिक पॉलिसी इतना ज़्यादा एजुकेट किया हुआ है कि आप वहाँ पे लोगों के पास जब हाथ धोने, जब वॉशरूम यूज़ करने जाए तो वो पानी ज़ाया नहीं करते. और जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था तो वहाँ पे उन्होंने कैटेगोरिकली लिखा हुआ था कि मैक्सिमम यूज ऑफ शावर इज 2 minutes. कि आपने 2 मिनट में शावर
ہم یہاں پہ لاہور میں یا گھروں میں جہاں پہ بھی جائیں تو ہم تو نلکا کھولتے ہیں, شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں. گرمی میں ٹھنڈا پانی آئے تو نہیں باز آتے ہیں, اور سردیوں میں گرم پانی آئے تو ہم تو آدھا گھنٹہ پانی کھول کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب پانی ختم ہوگا تب نکلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پبلک پالیسی ہے یہ سارا ان چیزوں کو, اور وہاں پہ جو آرکیٹیکچر اور کنسٹرکشن کے اندر بھی انہوں نے بہت زیادہ یہ امپلیمنٹ کیا تھرو پبلک پالیسی, کہ جتنا آرکیٹیکچر ہو رہا ہے نا کہ آپ نے ان کے واش روم کے اندر ہاتھ دھونا ہے نا, ہاتھ دھو کے وہ جو پانی ہے نا وہ پانی ضائع نہیں ہوگا, ڈرینیج میں نہیں جائے گا, دیٹ ول گو ان ٹو دا فلش, اور وہ اس کو یوز کریں گے. ریسائکلنگ کر رہے ہیں سر. وہاں پہ جن لوگوں نے اس زمانے میں پول رکھے ہوئے تھے یا اب ان کو کہہ دیا ہوا ہے, اور وہاں پہ پھر انہوں نے سختی یہ کی, انہوں نے ایک واٹر ٹینک لگا دیا تھا واٹر, انہوں نے کہا کہ 17 لیٹر روز کا پانی ملے گا تھرو کاؤنسل. اینڈ شروع میں بہت ان کو پرابلم آئی, لیکن انہوں نے اس چیز کو بڑی سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کیا. دیکھیں یہاں پہ بہت ساری انفورسین چیزیں ہیں جو آ رہی ہیں یا ہونے جا رہی ہیں, ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. اینڈ واٹر شارٹیج از ون آف دیم پاکستان کے اندر, کیونکہ واٹر لیول بہت نیچے جا رہا ہے, ہمیں آئیڈیا نہیں ہے, ہم اس کے اوپر کام نہیں کر رہے. تو لہٰذا یہ میں نے آپ کی باتوں میں سے بات نکلتے ہوئے ایک بات کی ایگزامپل دی کہ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ ایوری اسپیکٹس, کہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے ایٹ این اینڈ. کیونکہ اگر ہم نہیں سوچیں گے, جیسے میں نے آئی نیم فیو سیکٹرز کے, ان سب کو دوبارہ کلچر, اسپورٹس, ایجوکیشن, ہیلتھ, ان سب کو کرنے کی ضرورت ہے, ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے پبلک پالیسی کو. ہمیں ہر سیکٹر کے اندر بھی جو سب ڈویژنز ہیں اس کے اندر بھی سوچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو سر ہم لوگ we are going to be devastated by this bad public policy. So this is very important. I want to take advantage and take that privilege of Dr. Shujat Ali Saab being here. Yes, sir, we would like to have a abstract of whatever we have talked from your experience, and we would like to be enlightened from your views. That will be our honor to have you giving us this concluding remarks in abstract of whatever we have taught. Thank you, sir. Thank you, Dr. Rasa, for I was supposed to be an audience, a member of the audience, and I've been roped in by colleagues, honorable colleagues and yourself into sitting on the head chair and then I've been asked now to sum up what has been said so far. थोड़ा सा मैंने इस बहुत से सुनता रहा हूँ, दोनों बड़े लर्नेड कॉलीग हैं मेरे, और आपको भी माशाल्लाह आपकी भी जो मैंने आज सुनी मेरी, दिस इज माय फर्स्ट मीटिंग विद यू, एंड द काइंड ऑफ exposure you had of public policy all over the world, it's commendable, and your understanding and insights again, they're full of knowledge and full of experience, and they're very useful. So मैं आप पहले उसी चीज को मैं ज्यादा तैयारी करके तो नहीं आया, अपने तजर्बे से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा. हसन साहब ने आप बड़ी अच्छी तरीके से ये 5 चीज़ों का जिक्र किया, जिसमें पॉपुलेशन की बात हुई. इट्स अ वेरी वेरी प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ द डे फॉर पाकिस्तान, और हम इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे. हमारी जो पब्लिक सेक्टर है, हम देख रहे हैं, हमको ये इशू हमारा मेन स्ट्रीम इशू नहीं बन सका पब्लिक पॉलिसी का सो फार, बिकॉज हम पॉलिसी इन पाकिस्तान. इसी के साथ ही जो दूसरा जो लिंक इशू जो इन दोनों ने तो टच नहीं किया, जो सरकार साहब ने उसको टच किया, वो क्लाइमेट चेंज, जिसकी बात वो पानी की शक्ल में सामने आई है. कल आपने देखा इस्लामाबाद की 11 सेक्टर में वो जो आपने वीडियो फुटेजेस देखी, और वो गाड़ियाँ जिस तरीके से जा रही थी, और वो ये हम अपनी वो जो क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इम्पैक्ट हैं
उनकी जो रिड्रेस करने के जो मेजर्स हैं हम वो नहीं ले, हम उसको भी रिकग्नाइज, वो उसको ये कैसे इशू उसको तो दुनिया में रिकग्नाइज नहीं है। पॉपुलेशन तो सिर्फ हमारा इशू है, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू गेट ऑन टॉप ऑफ इट, बल्कि उन्होंने तो उसको दूसरी डायरेक्शन में पॉपुलेशन रिडक्शन अचीव कर लिया उन्होंने। फॉर देम दैट हैज बिकम अ प्रॉब्लम। हमारे लिए क्लाइमेट चेंज we are I think we are amongst the 10 most vulnerable countries in the world, and this is also an issue. और ये पानी के जो गंदा पानी हमारे छोटे शहरों में हमारी पब्लिक सर्विसेज जो जिस किस्म का पानी डिलीवर करती हैं वो it's very difficult to talk about it, the kind of diseases that come out of that diseased water and how it impacts the lives of poor people in Pakistan. तो ये पॉपुलेशन क्लाइमेट चेंज दोनों इंटरलिंक्ड चीजें हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा है, स्पीड बहुत तेज है, एंड उन्होंने वो सिंगापुर में मिसाल दी है, if we don't catch up, if we don't ready ourselves for that competition that is all around us, we will be forever stuck in this low level equilibrium of having a very low standard of living and being on the lowest end of all the global indices. मैं ग्लोबल इंडस्ट्रीज को देखता हूँ अपने काम के हवाले से, और कुछ एक दो का जिक्र भी किया है जो कोई क्रिएटिव किसी ने एनसीआर ने बात की, मैंने जो भी इंडस्ट्रीज निकाल के देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है देख के कि पाकिस्तान तो 100 से नीचे होता है, दुनिया में मुल्क बहुत ज्यादा है और सिर्फ हमारे से नीचे सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज होते हैं, नाइजर, Gabon, Mali. So is that our fate? Is that our destination? That is why we came along as a nation. ये बड़ी सोचने की बात है, इसके लिए सारी ये चीज़ again very important for rethinking public policies in Pakistan. We worry about these. We need to worry about this the status that we enjoy on these global indices. और ये एक और इशू की तरफ ले जाता है जो किसी ने भी in a way directly hit नहीं किया और उसको टच नहीं किया, वो है ग्लोबलाइजेशन। एक्चुअली पार्ट ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, दुनिया वो नहीं है जो पहले थी। नो, वी आर पार्ट ऑफ अ वर्ल्ड वेयर स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स आर बीइंग डिफाइंड बाय द वर्ल्ड एंड नॉट बाय अस, एंड इफ वी वांट टू prosper and thrive from the opportunities that this global world offers to us, the onus is on us to adapt and change to those global norms and practices and standards. ये हम इस तरह की सोच, ये आपको पता है कि टर्की जो है उसका सबसे बड़ा जो जिस चीज ने उसको हेल्प किया वो ये था कि एक जमाने में वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का उनका इंसेंटिव था कि वो यूरोपियन यूनियन उनको ले गया अपने अंदर, एंड दैट गिव देम सम सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव, एंड द कंडीशन वाज कि आप हमारे स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करें। They did all that homework. They by and large are on that standard, but some other factors intervened, and Europe more political than economic, and then they were denied that status that they deserved. But in the process, they have been able to operate it. अब टर्की जाएं तो लोग कहते हैं, मैंने सुनी है कि उनके हॉस्पिटल्स are state of the art, their education system is state of the art. हम वो मुल्क हैं जो किसी जमाने में हम जब पढ़ रहे होते थे तो हमारी सड़कों के ऊपर जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो मिडिल ईस्ट के तालिब इल्म हमें गाड़ियों में या बसें शहर में चलती थी और उसमें मिडिल ईस्ट की लड़कियां यहाँ होती थी और लड़के होते थे। आपको भी याद होगा अगर आपने वो एज नहीं थे, आई एम टॉकिंग ऑफ द 70s, तो वो हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने आते थे। ये पूरे मिडिल ईस्ट में मेडिकल स्कूल्स नहीं होते थे हमारे स्टैंडर्ड के, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ नहीं होती थी हमारे स्टैंडर्ड की, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे पास उनके पास नहीं थी, और उनके बच्चे हमारी यूनिवर्सिटियों से मुस्तफीद होने आते थे। इसी तरह अफ्रीका के बहुत सारे मुल्कों के जो मुसलमान कम्युनिटीज थी वो अपने बच्चों को तालीम के लिए पाकिस्तान के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में भेजती। अब वो हमारे इंस्टीट्यूशन का हाल देखें, हमारे इंस्टीट्यूशन बहुत गिर गए हैं in terms of the quality that one expects from them. तो ये उल्टा साइकिल बन गया, तो हमें अब वो साइकिल को दोबारा से साइकिल पर वापस जाने के लिए, वो बहाल करने के लिए हमें बहुत बड़ी एफर्ट
is a good hire, and for that छोटी मोटी public policy rethink नहीं चाहिए हमें. Not thinking on the edges, we need a big leap in terms of thinking on public policy. और वो अब मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करूँगा फोरम के हवाले से. ये फोरम पर जिक्र थोड़ा सा करते जाऊँ कि जितना मेरा ताल्लुक यहाँ रहा है इस चेंबर में. मैं जब सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज था, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज फॉर 3 years, but a very long tenure in an environment where people had very low tenures, very short tenures. तो उसकी वजह से मुझे यहाँ बहुत ज्यादा मेरा आना जाना नहीं रहा. आई थिंक आई सॉ थ्री डिफरेंट प्रेसिडेंट्स. मैं याद भी कर सकता हूँ उनको. ये फलाह वाले इरफान साहब भी रहे, फिर जो फोर्थ हो गए कैसर साहब के, वो भी बड़ी अच्छा रहे. एंड देन अनदर वन आल्सो जो 3 एक साल होता है कुछ करते. जो मैंने 3 जो सदर थे उसके साथ उनमें बहुत आता रहा, इंटरेक्शन होती, मुझे वेलकम भी किया जाता रहा, और मैं आपके रिसर्च डिपार्टमेंट से भी मिलता रहा. वो अमजद बशीर होता था वहाँ, उसके साथ भी बहुत इंटरेक्शन अभी भी होती है मेरी. तो हम लोग इट वॉज अ डिपार्टमेंट. कॉमर्स अलहदा था. जब मैं हुआ तो कॉमर्स इंडस्ट्री ज्वाइन भी हो गया. चेंबर्स वॉज द सब्जेक्ट ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट. वो नवीन से मेरे पास आया तो इस किस्म का बहुत सारा काम यहाँ हो रहा था. एक स्टडी थी जो शायद लोगों के पास है या नहीं, बट इस्लाम्स के कुछ लोगों ने वो की थी एंड फंडेड बाय द पंजाब गवर्नमेंट. हमने मुख्तलिफ चेंबर्स को रैंक किया था ABC के on the basis of certain attributes, quality of research and so on. तो 4-5 थे जो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड पे थे, बाकी उतारा बहुत सारे. तो वो मैं यहाँ पे अक्सर बात किया करता था कि and then I also had interaction. चेंबर के लोगों के साथ बहुत इंटरेक्शन भी हुई. लेकिन अक्सर ये होता ये था कि जब हम यहाँ आते थे तो पॉलिसी इश्यूज की बजाय the discussion would deteriorate into a grievance session. तो ये चेंबर्स आर ये जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का जो वैनगार्ड है, वो जो और तो कोई इदारा नहीं है, चेंबर भी एक वैनगार्ड है. और चेंबर भी है जिसने एडवोकेसी करनी है और जिसने पब्लिक सेक्टर के साथ इंगेज और इंटरेक्ट करना एज एन इक्वल पार्टनर. बिकॉज वी कांट कंसीव ऑफ अ thriving economy without the private sector. और उसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर को भी we can't wish it away. They both have to work together. और वो जो एंगेजमेंट का वो जो that space जो है वो हम पूरे तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. और वो दोनों तरफ की खामियां हैं. आई थिंक दिस इज बोथ साइड्स. बट गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, वहाँ एक और किस्म की डिफिकल्टीज हैं, चीजें होती हैं. चेंबर इज अ फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पैसे भी हैं, यहाँ टैलेंट भी है, या एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, जो मेंबर है आपके हार्वर्ड के बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जो यहाँ आपके अंदर हैं. उन लोगों को बैठ के ये बहुत सारी चीजों का जो एक्सपेक्ट करते हैं कि पब्लिक सेक्टर करेगा, और बहुत सारी चीजें यहाँ इस बिल्डिंग के अंदर होनी चाहिए. और वो इनोवेटिव आइडियाज, उनकी रिसर्च होनी चाहिए. नॉट थियरी रिसर्च, द काइंड ऑफ रिसर्च जो यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, प्रैक्टिकल काइंड ऑफ रिसर्च जिसमें प्रैक्टिशनर्स टेबल के अराउंड बैठे. मुझे पता आपके पास एक काफी स्पेस है, मैं आया भी हूँ. उसके पीछे वो व्यू है लाहौर की, वो रेसकोर्स पार्क का, और रिसर्च डिपार्टमेंट है यहाँ पे. तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, बट उस तरह का वो डिस्कशन लेवल में डिबेशन जो जिसका लेवल हमें चाहिए. एंड पब्लिक पॉलिसी इन माय व्यू, आई विल एंड विद दिस, पब्लिक पॉलिसी का जो डिसिप्लिन है ये 90s से पहले ये नहीं होता. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट जो है वो ही फैसला करेगी कि सोसाइटी में कहाँ जाना है. एक लोग हर एक ने ये अपना रोल जो है वो स्टेट को दिया हुआ था, स्टेक होल्डर्स ने, कि ज्यादातर थिंकिंग सोसाइटी के बारे में स्टेट करेगी. एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ फील्ड जहाँ पे इस किस्म की एक्सपर्टीज डेवलप करने के लिए वो एक रिसर्च भी होती थी और एकेडमिक्स भी डेवलप होती थी. 90s के बाद जब दुनिया में डेमोक्रेसी का दौरा आया तो वो स्टेक होल्डर्स बहुत बढ़ गए. मीडिया आ गया, जुडिशरी आ गई, बहुत सारी कम्युनिटीज जो रिप्रेस थी, जो मार्जिनलाइज थी, उनको आवाज मिल गई मीडिया की वजह से. बहुत सी ऐसी भी ग्लोबली तो बहुत सारी कम्युनिटीज जो है वो they had a voice they did not have
अभी है। इसी तरह हमारे मुल्क में भी हमारे कल्चरल कॉन्टेक्चुअल माहौल के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज को वो आवाज मिल गई मीडिया के थ्रू, जुडिशरी के थ्रू। अब अगर इन सारों को हमें अकोमोडेट करना है तो हमने उनको धंधे से नहीं करना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैड some use of data as well, but now that data is no longer the mode that will get you good outcomes and good results. अब जो पब्लिक पॉलिसी का जो की एलिमेंट है वो है डिबेट एंड डिलिबरेशन। डिबेट एंड डिलिबरेशन के बगैर जो कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके बगैर पब्लिक पॉलिसी हैज नो मीनिंग। तो फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं अच्छे थे। तो अब ये जो डिबेट और डिलिबरेशन का जो माहौल है जिसके अंदर हमने चीजों को वापस में तय करके चीजों को आगे ले जाना है, उसके लिए फोरम्स चाहिए। और फोरम्स हैं, ये थिंक टैंक्स हैं, चेम्बर्स हैं, इनको हमें गोइंग फॉरवर्ड if you want to move towards a good equilibrium on a good trajectory where our people will be happier, our people will be more well off, तो हमें ये सारी चीजें बहुत सालों पे बहुत डिस्कशन और बहुत डिलिबरेशन करनी है। Singapore is not a good model for that from that point of view. I've also spent 2 stints of 3 weeks each roaming around Singapore. Singapore में it's an authoritarian state. Voices नहीं है। You cannot voice your what you are going through. It's a tightly controlled police state kind of format. तो वो हमारे लिए उस तरह की रेलेवेंस सीख सकते हैं जरूर हम, लेकिन हमारा माहौल जो है it's a tower of which is हाँ दुनिया जान की आवाजें, people are bursting from their whatever they're confined into to be heard. हमें वो चीजें चाहिए और उनके लिए एक आज का फोरम भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। see more such activity from the Jagir Badr Sahab, in the memory of Jagir Badr Sahab, जो उनके प्रधान साहब ने बनाया है। This should be an important vehicle going forward. और भी इस तरह के बहुत सारे हैं जहाँ आसान भी आते हैं, मैं भी उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ कभी-कभी। बहुत सारी चीजें इस तरह की इस्लामाबाद में बहुत सारी चीजें, lot of think tanks are sprouted. But chambers is one place जहाँ वो जिस किस्म की एक्टिविटी, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने मिसाइल, इतना टैलेंट, वो जो पोटेंशियल है, I think that potential has yet to show itself in the form of some tangible results. With these comments, I think thank you, Chairman and panelists for patiently hearing. Thank you very much, sir, for your kind words. आपके आने का शुक्रिया और आपने जो गुफ्तगू की और कंक्लूड किया। The conclusion which I is including all the stakeholders is very important in public policy from all sectors of the society, and innovation is the new name of leadership. That's what I can say. Thank you very much, Hassan Khabar Sahab, Akhtar Sahab, Dr. Sahab Aapka, Mia Munir Sahab, and all the audience, Shah Sahab, और चैम्बर के तमाम जो स्टाफ है जिन्होंने हमें असिस्ट किया टू ऑर्गेनाइज दिस फंक्शन। थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर बीइंग हियर टुडे। थैंक यू। एंड इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, वी विल इनवाइट यू इन आवर नेक्स्ट टॉक दैट विल बी ऑन डिजिटल गवर्नेंस।